countries, they're called undergraduate schools. So I am talking about a subject which is how you can get into undergraduate courses in foreign universities free of cost, not spending a single penny from your pocket. This is what I would be discussing, and what are the opportunities available across the globe, why we should send our kids to foreign universities, and what are the advantages of doing that, and how easy is the process or how tough is the process, which we will be discussing here, so that you can make your kids ready for that future opportunity which we are discussing today. So once we start getting into the subject, I have I'm looking for who are my target audience. When I say who is my target audience, I would say anybody and everybody who is above sixth standard in school. How come and why are you talking about undergraduate course and again sixth standard? There is a big relevance here. The need for it is basically when your child wants to go to an undergraduate course in foreign university, the profile of the student should be built from that age and academic year onwards, from sixth onwards, to make them get ready for the opportunity which is available across the globe in most of the countries like US, UK, Korea, Japan, um, or even in some countries in the Gulf like UAE, Saudi Arabia. There are opportunities which the universities which are tied up with the American universities or UK universities are giving education free of cost along with the accommodation, books, and all other opportunities. All right. So let's get into the topic. And when I said sixth class onwards, yes, basically what I said is uh, why sixth class? Because from there onwards, your child needs to have good uh, marks in the academic. At the same time, it is like not only academic, there should be extracurricular activities also needs to be developed from that age, that class onwards, like international Olympiads, like elocution, inter-school college competitions, inter-school competitions, national level, state level competitions. You should be able to perform in those, and you should have some recognized certificates from these institutions like Olympiads, the Spell Bee competition, which is today happening across the countries also. It is not only interstate, it is inter-country also is happening. International Olympiads are happening for even Spell Bee, the English. And when you are going for international, English is one of the core they look at as your medium of instruction. So they look at what is the score you have in English, and there are some exams like SAT, TOEFL, IELTS. These are the exams which you have some required scores to be having in order for you to get there to apply for this university. So when we talk, we are not going to talk how many marks you need for these courses and all that here, but only I will be talking at a very high level. And what are the prerequisites I will be talking, and I am not deep diving into the course, what is the fee here, what is the marks you need to get and all that. I'm not doing it. That is the parents' homework. They need to get started from there. I will only talk about the prerequisites, and you need to deep dive into those details. And if you have any queries, I will help you out whenever you are ready for it. Okay. That is the reason I said seventh standard onwards. Okay. Let me share the presentation. I think I will be coming online. Okay.
Yeah. Rajesh, haven't joined the presentation through my laptop, so I will be opening my web session also in a while, and we can have the presentation up and running. Okay. Meanwhile, I will be talking about, without this slide, I will be talking about the next target audience, who are my target audience. Uh, the next in line would be uh, the parents whose kids are getting ready for uh, just to start with education from prep onwards. Why am I talking so early for kids who are just at the prep level? This is a basic requirement which I would be looking at, and don't take me wrong here. Basically, when we are planning for our kids' future, I would recommend joining your kids into CBSE, IGSE, or there is IGBSE, International Curriculum, which is there. If you join into these type of schools, the advantage you get is you are exposed to multiple opportunities from the early stage of your kids' education, like attending international state level debates, international level competitions like Maths Olympiad, Science Olympiad, Chemistry Olympiad, Chemistry Olympiad, and all these things. On top of it, these corporate schools are the IGBSE and CBSE schools. They also put focus towards community work like NGO activities. All these are also handled are given. The kids are given the exposure to these things also at the fifth standard onwards. They are getting exposed to this things. So your kid will have an overall exposure towards the entire ecosystem around them, how the community is growing, how the what are the challenges the community is facing, all these things, the NGO activities will make you learn those things. So that is the reason. And most of the government schools where we talk about, they do not have these type of activities incorporated into their uh, curriculum actually. That is the reason why I was saying when you're planning for kids education from the prep onwards, be prepared to put them in the right schools so that the career growth or the career opportunity from them from the beginning is built in such a way that you don't need to repent at a stage where when you look for opportunity, you are unable to match the expectations of the present day environment. This is why I said parents of kids who are just starting their education from step onwards. This is the next one. The third biggest target audience for me here, today's topic is the just married couples. These are the guys, today's early married couples, those are the guys who they are planning for the future at least 15 years ahead of how they get into their marriage life journey. So that is the reason I'm saying I'm bringing the next target audience as just married couples. How many kids they want, and what type of schooling we need to give, and how we need to take them to the next level, what type of education we need to provide, what are the exposures we need to give to them. All these things, these guys plan it well ahead in time, not like our parents who are from early 30s, 20s. They haven't had that futuristic thought, but today's kids, the couples who are getting married in the last 5, 10 years, they are doing that, who are very doing planning their future in a very planned way. That is the reason I put the third sub point as the just married couple. Yeah, Rajiv, please go ahead, take up. ओके सर। आज का जो सेशन का टॉपिक है स्टडिंग अंडर ग्रेजुएट्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि
अंडर ग्रेजुएट्स की जो डिग्री है की पढ़ाई है हम बाहर के विश्वविद्यालयों में प्राप्त करना। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगी। इसमें हमारी रेडीनेस क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल बेसिस पे क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन के बेसिस पे क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी है और इसलिए ये सेशन का टॉपिक ये रखा गया है। अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा इस टॉपिक में टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस में सर ने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। वो पेरेंट्स जिनके स्टूडेंट्स 6th ऑनवर्ड्स हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, प्रेपरेटरी क्लासेस में हैं, और वो जो अभी न्यूली मैरिड कपल है। इन तीनों में बहुत डिफरेंस है, बट फिर भी इन तीनों को रखने का रीज़न ये है, अगर हम बात करते हैं न्यूली मैरिड कपल की, तो जब भी न्यूली मैरिड कपल प्लान करते हैं अपने बच्चों के कैरियर के या एजुकेशन के लिए, तो उन्हें 10 से 15 साल एडवांस में आकर के सोचना होगा कि कैसे वो अपने बच्चों को उस लेवल पे, उस कंपटीशन में, उस एनवायरनमेंट में लेके आ सकते हैं, और इसकी प्लानिंग उनको अभी से करनी होगी। तो इसलिए टारगेट ऑडियंस में न्यूली मैरिड कपल भी रखा गया है। एक कैटेगरी है जिनके बच्चे प्रेपरेटरी क्लासेस में हैं। देखिए आगे फ्यूचर बिल्ड करने के लिए, कैरियर बिल्ड करने के लिए शुरुआत बच्चों का जो एजुकेशन का जो बिगिनिंग है वो बिल्कुल शुरुआत से ही करनी पड़ती है। अगर हम शुरुआत से ही करनी पड़ती है के बारे में बात करते हैं तो वो शुरुआत प्रेपरेटरी क्लासेस से होती है। हमारे देश में बहुत तरह के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स में जो कॉन्वेंट हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, सीबीएसई पैटर्न, आईसीएसई पैटर्न के स्कूल्स हैं। इनमें अगर हम डिफरेंशिएट उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम डिफरेंस टेक्निकली डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस ये है कि अगर हम अच्छे प्राइवेट स्कूल्स या कॉन्वेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एक जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स या नॉर्मल स्कूल्स में वो नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने कहा कि बच्चों को प्रिपेयर करना है, आगे के लिए कैरियर बिल्ड करना है, प्रोफाइल बनाना है, तो इसकी शुरुआत प्रिपरेटरी क्लासेस से करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट बिगिनिंग से ही क्रिएट करें कि बच्चा उस एनवायरनमेंट में ट्यून हो जाए, मोल्ड हो जाए, और वैसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करे, एकेडमिक के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी वो पार्टिसिपेट करे। इसके लिए प्रेपरेटरी क्लासेस से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसलिए टारगेट ऑडियंस में इनको रखा गया है। और प्राइमरी है ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे 6 ऑनवर्ड्स या 7 ऑनवर्ड्स स्टैंडर्ड में हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा फेज़ है जहाँ पे उस बच्चे को बिल्कुल तैयार करना ज़रूरी है। अब इसमें अगर तैयारी की बात आती है तो एकेडमिक तो मेन पार्ट है, एकेडमिक में तो उसको अच्छा करना ही है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे और एक्टिविटीज़ में उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अचीवमेंट लेना पड़ेगा, जो उसको फ्यूचर में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए हेल्प करेगी। इन टर्म्स ऑफ एलओआर या लेटर ऑफ जो रिकमेंडेशन होता है उसमें हेल्प करेगी। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो हो सकता है नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरनेशनल जो साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, ये जो जिस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट रहता है, जो स्कूल्स खुद इन एग्ज़ाम्स के लिए एक एनवायरनमेंट देते हैं और एक फोकस प्रोवाइड करते हैं कि बच्चा उस कॉम्पिटिशन में अपने आप को लेके आए और उसकी तरफ वो मोटिवेट हो। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। और एक चीज़ मैं स्किप कर गया, जैसे कि प्राइमरी स्कूल की प्रेप की बात हो रही थी, कि आगे बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ एग्ज़ाम्स देने होते हैं, जैसे कि सेट एग्ज़ाम्स हुआ या टॉफल एग्ज़ाम्स हुआ, तो कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, वो मैंडेटरी हो जाता है। तो इसके लिए शुरुआत से अगर प्रेपरेटरी क्लासेस से अगर बच्चे को वैसा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो लैंग्वेज में अपनी कमांड रख सकता है, जो कि आगे उसको सेट, टॉफल इस तरह के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में उसकी मदद करेगा। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है, अ, इसमें टारगेट ऑडियंस में 3 कैटेगरी इसलिए रखा गया है ताकि 3 7 स्टैंडर्ड्स या 6 स्टैंडर्ड्स ऑनवर्ड्स, जस्ट मैरिड कपल, और जो प्रेपरेटरी क्लासेस ऑनवर्ड्स, ये 3 कैटेगरी में हमने बाँटा और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, जिससे हर तरह के लोग अपने समय से अपने बच्चों को उस माहौल में लेके आ सकें और तैयारी की शुरुआत सही ढंग से कर सकें। सर। Yeah, thank you, Ranjit. Yeah. Next subheading would be foreign university which give full ride. When I say full ride, what is this full ride? Basically, full ride in the sense, in India, we all know what is scholarship. Scholarship is, in India, when we talk about scholarships, it is basically a partial thing, or 75% or 70%. But the universities which I am talking about today are basically universities which
which are providing education to the student free of cost, even to the extent of your accommodation and travel to the country to where you are going on a semester basis. Every semester they will give you a return ticket to your origin location, means to your home country also. Okay, these are the advantages the universities are providing. Only thing is these are existing since long. It is not today only, but we, as many of the parents, we do not have the information about it. At least me, for that matter, I didn't have this clue or information just a year back. Before that, I didn't have. Else, I would have sent my elder daughter also to the foreign university instead of making a study in India. Fortunately, when we are trying to look for her post-graduation, which universities we need to send, what are the scholarships available, and all that. When we are searching for it, we found that there is an opportunity for even undergraduates, and that is where we could do some research in depth. And my younger daughter, who is right now into 12th class, she got an admission into one of the premium institutes of the world, which is New York University. So that is how we got to know. And I thought when Arunji was asking me, try to give some new topic, I told him that this is the better topic. I think because I have taken the advantage of it, that I would like our community people also should take the advantage of the facility available across the globe for our kids. That is the reason why we took this topic and we are discussing it today. Right? So, getting into why foreign university. Before the start of the topic itself, I discussed about this. Why we need to send our kids to foreign universities? Because the exposure, quality of education, the type of courses, whatever are available in India, are, I would say, very minuscule. When you are going outside the country, there are abundant opportunities available, not only in engineering or medical colleges, but also in fine arts, your arts and commerce, all the humanities. In those also, there are many other opportunities. One need not be a doctor or an engineer. There are other opportunities available. And for that also, these are the exams which you need to go through, or you need to have your profile built up to get the admissions into these foreign universities, even into humanities. What are the opportunities? All that I have not prepared an elaborate list. I would request if any parent is interested. I have, in the end, I have shared some of the YouTube links where they have provided some information, and you need to do your homework on that to get to know what are those, what is my student, my child interested, whether it is humanities, engineering, or doctor. And my humble request to everybody participating here today, not to push your child to what your requirement is. Please bear this as a request, as a command, as a suggestion, whatever you think, however you think. Even if you think it is harsh to you, I don't mind, because I would always counsel, don't put pressure on your kids. Let them do what they want to be, so that they will shine in that specific area. We all need not become doctors, or all need not become engineers, right? All need not become software engineers, especially. Okay, so that's where I take this on. So be very clear on that, and do not push your kids to the wall and ask them to do a specific thing what you wanted. Let them do what they wanted. This is one humble request I would do to the entire company here who are attending. Okay, so when I go, so how do we get to know the details? Yes, definitely there's abundant information available on the web, a better information available on the YouTube in terms of YouTube videos. Once you hear some of the video links which I am sharing in this presentation at the back end, you will be able to get a lot of information about what
there you as a parent or you as a student who is hearing today, I would request you to go to the specific individual websites of that particular universities, deep dive into that university website, get to know what are the courses offered, how to get there, what are the scholarships available, how do I apply for it, or what is the admission process for it. Everything is very detailedly given, and on top of it, one important thing I would tell you all guys is there is one email ID given there on their website for their specific education counselor. And if you have any silly question also, you shoot that question to that education counselor. He or she are the best resources available in those specific universities, and they are helping you with the information, whatever you're looking at, and they respond within a week to 10 days, and definitely you will get an answer. And we have benefited from that. And my humble request to everyone is not to approach any education counselors sitting in India trying to make their first bucks by saying we can send your kids to foreign universities and all that. They don't have this type of information which I'm trying to talk. They will not tell you about the free full ride scholarships which you are going to get, all that. They say we will get you scholarship 20%, 30%, 50%, but that's all trash. They will not be able to do. Whenever if you have your profile already built, you automatically are eligible for it. Don't fall into their trap and pay that 10 to 30,000 whatever they charge for you. And because I have also done that, and whatever we did the homework before, and when we went to them to thinking that we get more information from them, they didn't have information at least to the extent what we have already got through the websites and the other media, other channels of communication. So don't get into that trap. Okay. What are the prerequisites to this? Definitely, there are some prerequisites. There is something called your profile which needs to be built, which is your almost like your resume. You need to create your own resume, and you need to write an essay in regards to who you are, what have you achieved till date from your days of early schooling till date, and what is that you want to do. And when you are applying for a specific college, you need to write why you want to join that college in specific, what is that specific course you're looking at which gives more impetus to your requirement or your thought of getting into a specific line of action. Okay, this is one requisite, which is a profile. Next is a essay about you yourself and all. Third is the LORs, the letter of recommendations from at least one from your school, one from your technical resource, wherever you have done some internships or from NGO works which you have done, a commendation letter about you saying that this is the activity or the work you have performed for them, and you are a candidate who tomorrow, once selected into that specific university, will be a value add asset to the institution. That's what they will give. And these are the letters, formats which we need to create those LORs and give the respective required people to get their author signatory done, because they will not help you in building these LORs. There are abundant copies available on the web about these LORs, samples, and when you are right in time to get to that, if you need any help, I can also help with the LOR formats which we have used already and we got the admission. So this is what I could say. Rajesh, please take it from here so that I will talk about the scholarships a little bit detail next after this. ओके सर, अगला टॉपिक है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ विच गिव फुल राइट। यहाँ फुल राइट सर ने इसलिए मेंशन किया है कि अगर हम बात करते हैं हमारे देश में, इंडिया में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ हम लोग डिग्री लेते हैं, कोर्सेज करते हैं, यहाँ भी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन यहाँ जो स्कॉलरशिप्स हैं वो पार्शियल हैं, कंप्लीट नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड की अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ 100% कंप्लीट स्कॉलरशिप
इंक्लूडिंग ट्यूशन फी ये मिलता है। तो अगर इस टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों बच्चों को ज़रूरी है भेजना बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में? हम बाहर क्यों भेजें? इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? ऐसे क्या? Rajiv, 1 second, I'll interrupt you. ओके, ओके, It's not only tuition fees, it is for your books, hostel, ओके। accommodation, food, your transport to the country where you're going, from your home to the country where you're going and back every semester. Some universities are providing every semester, some universities are providing yearly also. That is the advantage of these type of full ride scholarships. Yeah, please go ahead. ओके। तो फुल राइट से यहाँ मीनिंग है ऐसे स्कॉलरशिप जहाँ पे अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ साथ जो ट्यूशन फ़ी है, टू एंड फ्रो, टिकट्स हैं, लॉजिंग, बोर्डिंग और सम एक्सपेंसेस पे कहीं-कहीं स्टाइपेंड की भी फैसिलिटी है अप टू सम एक्सटेंट। तो इस तरह की इस पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि क्यों ज़रूरी है या क्यों हम अपने बच्चों को भेजें अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में? इसके क्या दूसरे और फ़ायदे हैं? फ़ायदे की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम जो एजुकेशन सिस्टम हमारी इंडिया में है या जो कोर्सेज़ हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, उसके कंपैरिज़न में हम कह सकते हैं कि अब्रॉड की कई यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेज़ हैं, वो ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड हैं। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है तो वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को मिलती हैं, ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस मिलते हैं। वो अपने आप को बेटर डेवलप कर सकता है, बेटर मैनेजरियल स्किल्स अपने में ला सकता है या इन टोटलिटी अपने कैरियर को बेटर तरीके से बिल्ड कर सकता है आफ्टर ग्रेजुएशन। मुझे लगता है बहुत से इंजीनियरिंग के अगर ब्रांचेज़ हैं, तो ऐसे कुछ एक्सटेंसिव ब्रांचेज़ हैं, कुछ ब्रांचेज़ के अंदर जो इंडिया में नहीं है, जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में है। तो ये एडवांटेज मिलता है अगर हम बच्चों को अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करवाते हैं। तो ये तो मेन बेनिफिट है कि इसका। और फिर इसके बारे में हमें लेनी होगी जानकारी, हम इसके बारे में इंफॉर्मेशंस कहाँ से ले सकते हैं? तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम सभी जानते हैं, सर्च इंजन गूगल है। गूगल से हमें किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल ले सकते हैं, यूट्यूब में हम वीडियोज़ देख सकते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हम जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी भी है, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस दिया रहेगा। हमारे जो भी पर्सनल क्वेरीज़ या डाउट्स हैं, हम उस मेल आईडी पे अपनी मेल ड्रॉप करके उसका आंसर ले सकते हैं। डेफ़िनेटली वो इसका रिप्लाई करेंगे। ये तरीका है वहाँ के बारे में जानकारी लेने का। एक और तरीका है एजुकेशन काउंसलर का, लेकिन हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि एजुकेशन काउंसलर जो इंडिया में अवेलेबल हैं, ये इन्फॉर्मेशंस तो प्रोवाइड करेंगे लेकिन वो बिल्कुल बेसिक या मिनिमम इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करेंगी। और ये ज़रूरी नहीं कि वो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशंस दे रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग की हो। कहने का मतलब वो चार्ज भी करेंगे, 10,000 से लेके 30 या 40,000 चार्ज करते हैं, बट जो उनकी इन्फॉर्मेशंस हैं वो उस लेवल की हमें नहीं मिलेगी जो हम लोग खुद अपने होमवर्क करके खुद का सेल्फ होमवर्क करके इंटरनेट के थ्रू हम सर्च करके अपनी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं और यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस से बात करके, हम मेल लिख करके भी हम वहाँ की जानकारी ले सकते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एजुकेशन काउंसलर के पास जाएँ, ये हम खुद से अपने प्रिपरेटरी, हम खुद का होमवर्क से भी एजुकेशन इस बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है प्री रिक्विजिट्स की, तो इसमें मेन है उस स्टूडेंट का रिज्यूमे। रिज्यूमे हमको प्रॉपरली लिखना होगा, सारी इन्फॉर्मेशंस लिखनी होगी जो उसकी स्टूडेंट्स की बेसिक मीन्स स्ट्रेंथ है, लाइक एकेडमिक्स में जो अचीवमेंट है वो लिखना होगा। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटी में जो अचीवमेंट है वो मेंशन करना होगा। लेटर ऑफ रेफरेंस LOR जो होता है, ये बहुत हेल्प करता है यूनिवर्सिटीज़ में, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए। तो ये हमें जितने हम नंबर्स में ले सकें, वो चाहे तो स्कूल के किसी स्कूल से हो सकता है, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का हो सकता है, अगर हमने कहीं इंटर्नशिप या कोई ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया है वहाँ से हो सकता है। तो LORs बहुत हेल्प करता है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए बाहर की। ये हमारे रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करता है। और रिज्यूमे में अपने आप को ऐसे जो अपना आपको डिफ़ाइन करना होगा, क्लियरली और कंप्लीटली डिफ़ाइन करना होगा, जो कि उस स्टूडेंट का वैल्यू एडिशन उसमें कंप्लीट तरीके से दिखे। तो ये कुछ फ़ायदे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए, जो कि फुल स्कॉलरशिप के साथ देते हैं फैसिलिटी, जिसमें हम लोग, जो कि इंडिया में नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है। सर, And essay, there is an essay which you need to write about the student, about the student's career
till date, which is up to 12, what she has achieved, what are the what is the goal she has for the future, what is the course he or she would be liking to look at, and why she is interested in that specific university. These are the things which you need to cover in the essay within a 650 words only. And in this you need to be very specific, precise, and to the point, giving more information in less number of words. That is the basic requirement. And this is one of the prerequisites which actually takes you to the next level. And finally, once all these are done, there is something called Common App where you upload all these documents into that website, where and in that website you fill all your details along with your financials, everything. And when I say financial, what is this financials mean to me? They are your 2 years ITR returns, income tax returns, uh, your financial investments, what you hold in India, your house, your first house, your investment house, your other assets, and all these things. Why are these needed for them? They look at your financial strength. Based on that, they give you the full right. What is the minimum eligibility to get the full right? Is minimum if any family income is less than 65,000 US dollars, you are going to by default get full ride scholarship if your profile is selected. That is the simple terms which I can tell you. $65,000 when converted to Indian rupees would be around 45 to 50 lakhs, roughly in between this range. Because today we are around 76 rupees per dollar, right? So 1 rupee to $1 is equal to 76 rupees. Converting that, it would be somewhere ranging between 45 and 50,000, 50 lakh rupees. Correct, Rajesh? Yes, sir. Right. 65 right? Right. So any family income per annum, it is not crossing 50 lakhs, 45 to 50 lakhs, you are, once your child's profile is selected, you are by default going to get a full rate. That is one advantage. And there are a couple of types of scholarships. One is need blind, one is need aware. Let us not discuss on this too much because we have a video which talks about need blind and need aware. What is the difference and all that? You will understand when we run that video. Please don't rush and leave the discussion so that you understand very clearly how she has explained you very clearly in the video. So I would request everyone to be here. Once we complete these four, we are in the third slide, another two slides are there. Once we complete that, we will move into the video where you will get to know all that information also. Yeah, Rajesh, yes. सर ने कॉमन ऐप के बारे में बताया। कॉमन ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना है उसको अपनी पर्सनल डिटेल कंप्लीट फुल डिटेल उसमें उसको फिल करनी होती है। उसमें उसका पर्सनल डिटेल आएगा जो कि उसने रिज्यूमे में मेंशन किया होगा, उसके अचीवमेंट होंगे, पर्सनल डिटेल्स उनके पेरेंट्स का, मदर का, फादर का, उनके फैमिली मेम्बर्स की इनकम जो उन्होंने आईटीआर में मेंशन किया होगा उसके हिसाब से। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है, अबाउट 5 to 6 पेजेस का ये फॉर्मेट होता है जिसको बहुत केयरफुली फिल करना होगा क्योंकि ये इसके बेसिस पर ही उनका सिलेक्शन या यूनिवर्सिटीज़ में से कॉल या सिलेक्शन डिपेंड करता है। अगर मैं सही गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि कॉमन ऐप जो है बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड ये कॉमन ऐप से लिंक होती हैं। अगर हम कॉमन ऐप में डिटेल्स डालते हैं तो वो डायरेक्टली पहुंच जाता है उस यूनिवर्सिटी के चेक बॉक्स में या उनके इनबॉक्स में ये पहुंच जाएगा और अगर ये उनके क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं तो वो वहाँ से उनको रिप्लाई या रिस्पॉन्स मिलता है। इसमें एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी है, जो इनकम है, एनुअल इनकम का जो क्राइटेरिया है ये एक मिनिमम जो है 65,000 यूएस डॉलर से कम होना चाहिए जो कि इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख के आसपास होता है।
तो इन सारी डिटेल्स को कंप्लीट डिटेल के साथ में सही इन्फॉर्मेशन हमें भरना होगा कॉमन ऐप के थ्रू। और कॉमन ऐप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि लिंक्ड है, जो कि इनको इन डिटेल्स को डायरेक्टली वो एक्सेस कर सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे उनका सिलेक्शन डिसाइड होता है। एम आई करेक्ट सर? Yes, sir, you are right. And yes, in this common app, you can select what are the universities you want to apply. You just need to check box so that it will go, your application will go to that specific college separately as if you are applying separately to that university. Okay. So that is the advantage of using a common app. But only small difference here is when you are doing this, at that time when you are using the common app, the essay where what you are writing will only go to a specific type of course. So you need to be little bit generic there. If you are applying individually to each college separately, that is a tedious task, but that is advantage in one way because you can write for a specific course selected in that university and why you want to do that in that particular university. That makes more logical to them. But you need to apply n number of applications. That is the small difference which is there, hidden difference. Okay. You need to send all those documents individually to each college. But when you are using a common app, this is the biggest advantage here. Okay. Yeah, right. ये कॉमन ऐप में अप्लाई करने का सबसे एडवांटेज ये है कि अगर हमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सेपरेटली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं क्रॉस द वर्ल्ड, अगर 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो हमें अलग अलग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें हम कॉमन ऐप के थ्रू अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, और इसमें हम जो भी हमें जिस कोर्स या जिस कॉलेज के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसे हमें स्पेसिफिक मेंशन करना होगा बहुत केयरफुली। और ये एक कॉमन ऐप के थ्रू एक हम डायरेक्टली सिंगल एप्लीकेशन में हम मल्टीपल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे यूनिवर्सिटीज़ इस कॉमन ऐप को यूज़ करते हैं, उससे वो लिंक्ड है। तो इसका ये बेनिफिट है कॉमन ऐप में अप्लाई करने का, अदर देन कि हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सेपरेटली अप्लाई करें। Rajitji, are you through your laptop or you are still on the phone? लैपटॉप सर। Laptop, right? Right. Okay. Now I think we are almost done. I'm just having last slide as what are the prerequisites, all that we already covered. So I would say there are some references which we given as YouTube references. So click on the first link. You should be opening the same video which we have opened last time. Is the deck open on your screen? Because my WhatsApp in the laptop is not open for some reason. Okay, I'll try, sir. I'll try. Still trying, but I'm not able to go because already we are 9:25. We'll complete this because that video itself is 20 minutes. I didn't want to take that risk, so link of like open करो। First one Sir, if possible, it is better to circulate in the first one link को इसमें definitely, sir. There is no hidden task here. I will definitely share that PDF. Aditi, just put that PDF in the group, right? In the No, sir. With respect to this video link, video link. instead of playing, everyone will watch their mobile. तो फिर करो। Okay, you don't want to hear right now. Just post that link so that we are good to go. That is the first link. Sir, actually, this PDF contains all those reference links, sir. So this is just one which has all the information also discussed. So we are trying to run this, but as you said, we will definitely share it, and I think if that is the case, we can conclude it in the next couple of स्क्रीनशॉट नहीं करते इसमें, यूट्यूब पे है ना वो तो। Rajiji, just post that in the WhatsApp chat. Oh, okay. I'm doing, sir. In the meeting, Google Meet chat itself, you post that link, not in the WhatsApp chat, in the Google Meet link or chat, so that as Panduji said, we can conclude it.
So we are almost at the fag end. So anybody has any questions, you can throw on, and if there's any thing which I can tell, definitely I'll try to. बोलिए ना, आप किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ ओके सकते हैं। कोई मेंबर कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, या कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और हम सभी के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि हम सभी टारगेट ऑडियंस के कैटेगरी में सारे हैं। अनिल जी, आप जो रिकॉर्डिंग भेजोगे ना, जी जी सर, हाँ उसमें ये लिंक दे दीजिए, वो जो वीडियो दिखाने वाली थी उसकी, ठीक ठीक, ओके ओके, तो लोग उसको भी देख सकते थे। हाँ, ओके 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 सर। सेंड करने के पूछना मेल किया सर। सर नमस्ते सर। बोलिए। ऑन करना है। हाँ सर, हाँ सर, रविशंकर सर మీతో కూడా ఒక మాట। किसी न किसी फिल्म शेयर इसी प्रोग्राम में अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में तेलुगु में ट्रांसलेट करके पहले हम कर रहे हैं ना ज़्यादा ग्रुप्स में, ऐसा पूरा ग्रुप्स में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करके। सर शुड आई प्ले द वीडियो? Education seems to be expensive in most of the countries in the world. Every year, many countries, people pay thousands of dollars to just. सर शुड आई प्ले द वीडियो? People don't want to hear that video right now. So what I would request is not for this audience, but when you are uploading the video, the present recording, in that you play the video and upload the recording. Okay. Hope I am clear, You right? can give the link also. Okay, sure sir. Right. Yes, Tyagaraja. Tyagaraja, చెప్పండి. అదే సార్, ఈ రోజు జరిగిన దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తీసుకొని దాన్ని నీట్ గా తెలుగులో టైప్ చేసి రేపు మనలో అన్ని లోకల్ గ్రూప్స్ కి పంపిద్దామనేది గతంలో అలా చేసేవాళ్ళం. ఈ రోజు మీటింగ్ లో జరిగిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని లోకల్ లాంగ్వేజెస్ లో సెండ్ చేసి పంపించేవాళ్ళం. దానివల్ల రెస్పాండ్ కూడా బాగుండేది. అందుకని ఈ మీటింగ్ లో జరిగిన సారాంశాన్ని బయట తెలియజేయడానికి అదొక మంచి ఇదిగా ఉంటుంది అనేది నా ఆలోచన సార్. రేపు నేను మీకు ఫోన్ చేస్తాను సందర్భాన్ని బట్టి, పాయింట్లు కానీ చెప్పి ఆ లింకులు మనం పెట్టేస్తామంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన, ఎందుకంటే మొత్తం మనకి ఇప్పుడు దగ్గర 40 గ్రూపులు దాకా ఉన్నాయి. కనీసం గ్రూప్ కి ఒక్కరు చూసినా కూడా 40 మంది మనకి అంటే 0.5% మన ఎక్స్పెక్టేషన్, అది కూడా కరెక్ట్ 40 మంది కూడా చాలు మన ఆలోచన. అంతే, అవునండి, మీ ఉద్దేశం అయితే కరెక్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ టుమారో ఎనీ టైమ్ అండ్ ఆఫ్టర్ 11 సార్, ఎనీ డే ఎనీ టైమ్ ఆఫ్టర్ 11 इज गुड फॉर। समापन कीजिए। जी सर, समापन ओके। आज का आज राकेश देवांगन की ड्यूटी है बहुत दिन के बाद। हाँ, राकेश जी बहुत दिनों बाद दिखे। मैं बीच में उनको स्वागत नहीं कर पाया क्योंकि सेशन स्टार्ट हो गया था, मैं कुछ बोल नहीं पाया उनके बारे में। ओके, तो और कोई मेंबर कुछ सवाल कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे तो कह सकते हैं। अजय जी कुछ कहेंगे? I think nobody is there. They are there. आपकी समाप्त। ओके, तो आज का जो ऑल इंडिया देवांगन कोस्टी कोस्टा फेडरेशन का गूगल मीट रहा 439, क्योंकि पिछले टॉपिक को हमने रिपीट किया बट फिर भी हमने कई जानकारियों, कई चीज़ों को डिस्कस किया है जो कि बहुत रिलेवेंट है। फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन विथ फुल राइट,
ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से हम समाज के बहुत से लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। हम सभी कहीं न कहीं इस स्टेज में हैं कि जिनको इस तरह की जानकारियों की ज़रूरत है और कई सही मायने में हम लोगों को इस बारे में जानकारी हाँ होती नहीं है और जानकारियों के अभाव में हम सही डायरेक्शन में हम जा नहीं पाते हैं। तो इस मंच के माध्यम से रविशेखर सर ने बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर किया है। पिछले हफ्ते भी सर ने बताया था, इस बार भी हमने उस चीज़ को रिपीट किया है, तो कई चीज़ें हमें लगता है कि हमारे दिमाग में भी आ जाएँगी और हम सभी इस बारे में अपने बच्चों को आज से ही तैयार करना शुरू कर सकते हैं, जिससे हम उनको कॉम्पिटिशन में उस लेवल पे हम लेके आ सकें कि हाँ, हम फुल राइट के साथ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग अप्रोच कर सकें। तो इसके लिए क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, चिल्ड्रन कैसे तैयार करें, पेरेंट्स को क्या अपने आप को तैयार करना होगा, ये तमाम चीज़ों को हमें जानना अभी से ज़रूरी है क्योंकि हर एक पॉइंट से ज़्यादा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है समय रहते। तो रविशेखर सर ने अपने बिजी शेड्यूल से सर आपने टाइम निकाला है और एक बार फिर हमें इस बारे में बहुत अच्छा अच्छी जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविशेखर सर। ऐसे ही अच्छे टॉपिक आपसे हमेशा उम्मीद करते रहते हैं और आप हमेशा लेके आते भी हैं और सभी लोगों का जो आज इस मंच पे जुड़े हैं, जानकारी हासिल की है, सभी का धन्यवाद देता हूँ और हम सभी की ओर से रविशेखर सर का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ अपना कीमती समय इस फेडरेशन के इस गूगल मीट में देने के लिए। आप सभी का हार्दिक आभार और इसी के साथ आज का गूगल मीट के समापन की घोषणा करता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। Thank you very much. Thank you very much. It's my privilege to help the community here so that let them know what I know. नेक्स्ट टाइम मधु अप्पा जी का जो है फाइनेंशियल अवेयरनेस सेशन रहेगा। अच्छा, be ready. हाँ उनका कुछ टॉपिक से रह गया था, कुछ सेशन से डिसकंटिन्यू हो गया था 2 वीक पहले। Okay, thank you very much. Good night. शुभ रात्रि. Good night, sir. Thank गुड you. नाइट एवरीवन, Thank you, गुड everyone. नाइट, गुड नाइट। Anybody who has any queries, you can directly contact me also.